हेलो गाइज, तो आज बीएससी नर्सिंग का एक मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। तो पहले भी और भी मॉक टेस्ट करवाया है, इजी एंड टफ लेवल का भी, तो वो भी देखिएगा आप लोग। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। टोटल 100 क्वेश्चन है, तो पहले फिजिक्स का है। फिजिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज ए कॉनकेव मिरर। ए कॉनकेव मिरर forms a real image of an object placed 50 centimeter 15 centimeter in front of it and focal length दिया हुआ है 10 centimeter. What is the image distance? तो मिरर फॉर्मूला है 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/b इक्वल टू f का वैल्यू दिया हुआ है, f का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर एंड u का वैल्यू है 15 सेंटीमीटर। इसको बिठाएंगे तो आंसर आएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, -30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ an object is placed at the center of the curvature of a concave mirror, the image will be। तो इमेज क्या बनेगा? virtual diminished, real same image, virtual same size and real highly enlarged. Option B is correct, real same size. If an object is placed at the center of the curvature of a concave mirror, the image will be real same size. Next question is a light ray passes from ear to glass. A light ray passes from ear to glass. Which of the following remains unchanged? तो ऑप्शन दिया हुआ है स्पीड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, डायरेक्शन। ऑप्शन बी इज करेक्ट, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट अक्रॉस द मीडियम, स्पीड एंड वेवलेंथ विल चेंज। स्पीड एंड वेवलेंथ विल चेंज। तो फ्रीक्वेंसी जो है ये रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा अक्रॉस द मीडिया एंड फ्रीक्वेंसी, स्पीड एंड वेवलेंथ विल चेंज। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज refractive index n of a medium is 1.5. The speed of light in that medium is refractive index n of a medium is 1.5. The speed of light in that medium is। तो इसको अगर निकाले तो होगा b इक्वल टू c/n। तो c का वैल्यू है 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई n। इनका वैल्यू दिया हुआ है 1.5 क्वेश्चन में। तो इसको अगर सॉल्व करें तो आएगा 2 × 10⁸ 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन occurs only when light। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन occurs only when light goes from rear to denser medium, goes from denser to rear medium। Option B is correct, goes from denser to rear medium। Total internal reflection occurs only when light goes from denser to rear medium। Next question is critical angle of glass ear interface। Critical angle for glass ear interface is 42 degree। For incident angle is 60 degree। The ray will reflect partially, totally reflect। Option B is correct, totally reflect। The critical angle of a glass ear interface is 42 degree। For incident angle 60 degree, so the ray will be totally reflect। The ray will totally reflect। Option B is correct। Next question is which of the following is true for convex lens? तो ऑप्शन दिया है always forms virtual image, always forms real image, can form both real and virtual images, cannot form image। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। which of the following is true for convex lens? Can form both real and virtual images। For convex lens true is can form both real and virtual images। Next question is focal length of a lens in ear is 10 centimeter दिया हुआ है। focal length of a lens in ear is 10 centimeter। if placed in water n equal to 4/3, focal length becomes तो f dash equal to f into n2/n1। तो इसका अगर वैल्यू बिठाए फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इन ईयर इज 10 सेंटीमीटर, तो 10 × 4/3। इसको अगर निकाले तो आएगा 13.3 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट।
Next question is question 9. For a prism of angle 60 degree, minimum deviation is 30 degree. What is the refractive index? तो refractive index बोला है, तो refractive index equal to sin a plus angle of prism plus angle of minimum deviation divided by 2 divided by sin a by 2. तो इस यहाँ अगर वैल्यू बिठाएंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो ए का वैल्यू है एंगल ऑफ प्रिजन इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन इज 30 डिग्री. तो इसमें अगर वैल्यू बिठाएंगे तो करेक्ट ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1.50. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which color deviates the most in a prism? Red, blue, violet, green. ऑप्शन सी इज करेक्ट, violet. Violet जो है ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एंड बेंड्स मोस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which lens is used in a simple microscope? Which lens is used in simple microscope? तो सिंपल माइक्रोस्कोप में कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया जाता है. ऑप्शन बी इज करेक्ट, कॉन्वेक्स लेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज in an astronomical telescope the final image is. In an astronomical telescope the final image is virtual and inverted. Option C is correct, virtual and inverted. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Huygens प्रिंसिपल एक्सप्लेन्स, वेव ऑप्टिक्स चैप्टर का है, तो Huygens प्रिंसिपल एक्सप्लेन्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिफ्रैक्शन थ्रू Huygens प्रिंसिपल occurs ड्यू टू. तो ऑप्शन दिया हुआ है चेंज इन स्पीड ऑफ वेव फ्रंट्स. ऑप्शन ए इज करेक्ट. रिफ्रैक्शन थ्रू Huygens प्रिंसिपल occurs ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ वेव फ्रंट्स. Next question is for constructive interference the path difference must be. For constructive interference the path difference must be. Option दिया है odd multiple of wavelength by 2, integer multiple of lambda, non-zero and lambda by 4. Option B is correct, integer multiple of lambda wavelength. For constructive interference the path difference must be integer multiple of wavelength. Next question is and path difference equal to n into wavelength. Next question is two waves are said to be coherent when they have same amplitude, constant phase difference, same frequency, same speed. Option B is correct, constant phase difference. Two waves are said to be coherent when they have constant phase difference. Next question is in Young's double slit experiment, if the distance between slit is double the fringe wedge. In Young's double slit experiment, if the distance between slit is double fringe wedge, तो fringe wedge beta equal to wavelength d lambda d divided by small d. So if Young double slit experiment, if the distance between two slit is double, if distance is double, तो ऑप्शन फ्रिंज वेज बीटा विल हाफ हो जाएगा. ऑप्शन ए इज करेक्ट. अगर डी अगर डबल है तो फ्रिंज वेज विल बी हाफ. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज if one slit in Young's experiment is closed, the pattern becomes. Question 18 is if one slit in Young's experiment is closed, the pattern becomes interference, diffraction, polarized and vanishes. Option B is correct, diffraction pattern. If one slit in Young's experiment is closed, the pattern becomes diffraction pattern. Next question is diffraction is more pronounced when the size of the obstacle is larger than wavelength much smaller comparable to wavelength 0. Option C is correct, comparable to wavelength.
diffraction. Diffraction is more pronounced when the size of the obstacle is comparable to wavelength. Next question is central. Central maximum in single slit diffraction is. Central maximum in single slit diffraction is narrowest, darkest, brightest and widest absent. Option C is correct, brightest and widest. Central maximum in single slit diffraction is brightest and widest. Next question is polarization. So polarization proves that light is longitudinal wave, scalar, transverse, mechanical wave. Option C is correct, transverse wave. Polarization proves that light is transverse wave. So only transverse wave can be polarized. Option C is correct. Next question is which of the following can be polarized? Option B is correct, light. Light is a transverse wave, so it can be polarized. Next question is a magnifying glass. A magnifying glass produces a virtual image at infinity. A magnifying glass produces a virtual image at infinity. The object is placed at focus. Option A is correct, focal length. To get the image, मतलब to get the image at infinity, अगर वर्चुअल इमेज एट इन्फिनिटी में अगर चाहिए तो ऑब्जेक्ट प्लेस करना होगा फोकल पॉइंट में, प्लेस्ड एट फोकस, फोकल पॉइंट में प्लेस करना पड़ेगा. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रिंज वेज इन यंग्स एक्सपेरिमेंट डिपेंड्स ऑन तो बीटा इक्वल टू लैम्डा डी डिवाइडेड बाय स्मॉल टी, डिपेंड्स ऑन डी, कैपिटल डी. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन. Fringe wedge in Young's experiment depends on distance between slits and screen. Next question is in diffraction angular wedge of central maximum increases when wavelength decrease, slit wedge increase. Option C is correct, wavelength increases. In diffraction angular wedge of central maximum increases when wavelength increases. Option C is correct. तो ये था टोटल 25 क्वेश्चन फिजिक्स का. तो नेक्स्ट केमिस्ट्री को देखते हैं. केमिस्ट्री इज which of the following is a primary alkyl halide. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, CH3CH2Cl is a primary alkyl halide. CH3CH2Cl. Next question is IUPAC name of CH3CHCl CH3 is. IUPAC नेम बताना है, नोमेनक्लेचर का है. तो ऑप्शन इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा मीथेन इथेन प्रोपेन 1 2 मीथेन इथेन प्रोपेन 2 क्लोरो प्रोपेन. ऑप्शन सी इज करेक्ट, 2 क्लोरोप्रोपेन. Next question is the C single bond X bond in haloalkenes is. The carbon single bond X bond in haloalkenes is non-polar, purely covalent, polar covalent. Option C is correct, polar covalent. Next question is alkyl halides. Alkyl halides can be prepared from alcohols using तो अल्कोहल बनाए अल्कोहल प्लस PCl3. ऑप्शन बी इज करेक्ट, PCl3 प्रोड्यूस अल्काइल क्लोराइड. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिएक्शन ऑफ अल्कोहल with SOCl2. Reaction of alcohol with SOCl2 in the presence of pyridine gives alkene, alkyl, chloride, ether, phenol. तो SOCl2 plus alcohol, reaction of alcohol with SOCl2, alcohol gives alkyl chloride plus SO2 plus
HCl. तो ऑप्शन B is correct, alkyl chloride. Next question is chlorobenzene. Chlorobenzene can be prepared by option C is correct, electrophilic substitution. Chlorobenzene can be prepared by electrophilic substitution. Option C is correct. Next question is boiling point of alkyl halides. Boiling point of alkyl halides increases with decrease in molar mass, increase branching. Option C is correct, increase in halogen atomic size. Boiling point of alkyl halides increases with increase in halogen atomic size. Next question is which of the following undergoes nucleophilic substitution most easily? So option C is correct, iodide. Iodide is the most living group. CH3I is most reactive. Option C is correct. Next question is when ethyl bromide reacts with alcoholic KOH, the product is, तो product बनेगा इथेन, मीथेन, इथेन. ऑप्शन B is correct, alcoholic KOH. When C2H5Br reacts with alcoholic KOH, the product is C2H4. Next question is which mechanism is followed in hydrolysis of tertiary alkyl halide? Which mechanism is followed in hydrolysis of tertiary alkyl halide? So SN1, SN2, U1 free radical. Option A is correct, S1, SN1. Which mechanism is followed in hydrolysis of tertiary alkyl halide? Option A is correct, SN1. Next question is which polyhalogen compound is used as a anesthetic? ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्लोरोफॉर्म. CHCl3 is used as an anesthetic. तो क्वेश्चन में बोला which polyhalogen compound used as an anesthetic? Chloroform. Option C is correct. Next question is which of the following is non-biodegradable and used as an insecticide? तो ऑप्शन B is correct, DDT. Option B is correct, DDT. Next question is CH2OH is classified as, propanol is classified as, option A is correct, primary alcohol. तो OH ग्रुप जो है ये प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, प्राइमरी अल्कोहल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आईयूपीएक नेम बताना है. तो मीथेन इज प्रोपेन ब्यूटेन, मीथेन प्रोपेन. ऑप्शन ए इज करेक्ट, 2 methyl 1 propanol. 2 methyl 1 propanol. Next question is hybridization of the oxygen atom in alcohol is. Hybridization of the oxygen atom in alcohol is. तो hybridization of oxygen atom in alcohol, तो oxygen in alcohol is sp3 hybridized. Option C is correct, sp3. Next question is alcohols react with sodium metal to give. Alcohols react with sodium metal to give sodium hydroxide, sodium alkoxide, sodium salt alkene. Option B is correct, sodium alkoxide. Alcohols react with sodium metal to give sodium alkoxide. मान लो अल्कोहल, ये अल्कोहल है प्लस सोडियम मेटल गिव्स sodium alkoxide plus H2. Next question is phenol reacts with bromine water. Phenol reacts with bromine water to give. Option B is correct, 2,4,6 tribromophenol.
Phenol reacts with bromine water to give 2,4,6 tribromophenol. Next question is Leucas test. Leucas test distinguishes between option दिया हुआ है alcohol aldehyde, primary and tertiary alcohol. Leucas test distinguishes between primary and tertiary alcohol. Next question is which alcohol is used as a antifreeze? Which alcohol is used as a antifreeze? Methanol, ethanol, ethylene glycol. Option C is correct. Ethylene glycol alcohol is used as a antifreeze. Next question is glycerol is also known as. ग्लिसरॉल को और क्या नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल. ग्लिसरॉल इज ऑल्सो नोन एज प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आईयूपीएक नेम बताना है. तो आईयूपीएक नेम ऑफ CH3 और सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 प्रोपेन. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, मिथोक्सी इथेन. मिथोक्सी इथेन CH3 जो है मिथोक्सी एंड चेन इज इथेन, मिथोक्सी इथेन. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईथर? कौन सा ईथर है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, CH3 और CH3. तो आर सिंगल बॉन्ड ओ आर स्ट्रक्चर है ऑफ एन ईथर. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. दोनों साइड में CH3 है एंड ओ है बीच में. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईथर्स आर रिलेटिवली unreactive because. ईथर्स आर रिलेटिवली अनरिएक्टिव बिकॉज. ऑप्शन दिया हुआ है सी सिंगल बॉन्ड सी नॉन पोलर, दे लैक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दे आर नॉन वोलेटाइल, CO बॉन्ड इज वीक. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. ईथर्स आर रिलेटिवली अनरिएक्टिव बिकॉज दे लैक हाइड्रोजन बॉन्डिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईथर्स गिव एन रिएक्शन. ईथर्स ऑन रिएक्शन विथ एक्सेस HI give. Ethers on reaction with excess HI gives. तो alcohol, alkene, only alcohol, alcohol and alkyl halide, 2 alkyl halides. Option D is correct, 2 alkyl halides. Ethers on reaction with excess HI. ether स्ट्रक्चर है ether के साथ HI. It gives 2 alkyl halides, 2RI प्लस H2O gives, प्रोडक्ट बनेगा H2O. तो 2 alkyl halides. ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सोल्यूबल इन वाटर? मोस्ट सोल्यूबल इन वाटर मिथानॉल, फेनॉल, डाईइथाइल ईथर, ब्यूटानॉल. ऑप्शन ए इज करेक्ट, मिथानॉल. मोस्ट सोल्यूबल इन वाटर इज मिथानॉल. तो नेक्स्ट देखते हैं बायोलॉजी को. फर्स्ट क्वेश्चन इज which part of the flower develops into the fruits? Which part of the flower develops into the fruit? ऑप्शन दिया हुआ है ओव्यूल, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल. ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओवरी. which part of the flower develops in the fruit? ovary. Next question is double fertilization involves. Double fertilization involves. Option B is correct. One male gamete fertilizing egg, another fusing with polar nuclei. Double fertilization involves one male gamete fertilizing egg, another fusing with polar nuclei. Next question is the pollen grain is found in the ovary, anther, style, stigma. Option B is correct, anther. The pollen grain is found in the anther. Next question is which of the following is not a part of pistil? ovary, stigma, style, anther. Option D is correct, anther. Which of the following is not a part of pistil? तो option D is correct, anther. नेक्स्ट क्वेश्चन इज तो पिस्टिल जो है ये फीमेल पार्ट है. पिस्टिल इज ए फीमेल पार्ट
and anther. Anther is a part of stamen, male part. So option D is correct, not a part of pistil. Next question is nutritive tissue in a seed is. Nutritive tissue in a seed is zygote, embryo, endosperm, cotyledon. Option C is correct. Nutritive tissue in a seed is endosperm. Next question is megaspore develops into. Megaspore develops into pollen grain embryo of female gametophyte, male gametophyte. Option C is correct. Megaspore develops into female gametophyte. Next question is which of the following represents the ploidy of endosperm? Ploidy of endosperm. Which of the following represents the ploidy of endosperm? ऑप्शन दिया हुआ है हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्राइप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड. ऑप्शन सी इज करेक्ट, ट्राइप्लॉइड. तो एंडोस्पर्म इक्वल टू फ्यूजन ऑफ वन मेल गेमीट प्लस 2 पोलर न्यूक्लियाई इक्वल टू ट्राइप्लॉइड, ट्राइसेन. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज embryo sac of angiosperm is typically. Embryo sac of angiosperms is typically, option C is correct, 7 cell 8 nucleated. Embryo sac of angiosperm is typically 7 cells 8 nucleated. Next question is the process of formation of embryo. The process of formation of embryo from the zygote is called embryogenesis, fertilization, germination, pollination. Option A is correct, embryogenesis. The process of formation of embryo from zygote is called embryogenesis. Option A is correct. Next question is outermost layer of an anther is called. Outermost layer of an anther is called epidermis. Option C is correct. Outermost layer of an anther is called epidermis. Next question is site of fertilization in humans is usually. Site of fertilization in humans usually fallopian tube. Option D is correct. Site of fertilization in humans usually fallopian tube. Next question is functional unit of the testis. Functional unit of the testis is seminiferous tubule. Option B is correct, seminiferous tubule. Next question is hormone. The hormone that triggers ovulation is. The hormone that triggers ovulation is follicle stimulating LH, luteinizing stimulating hormone. Option B is correct, LH. The hormone that triggers ovulation is luteinizing hormone. Next question is corpus luteum is formed from. Corpus luteum is formed from Graafian follicle. Option A is correct. Corpus luteum is formed from Graafian follicle. Next question is acrosome of a sperm. Acrosome of a sperm is derived from Golgi apparatus. Option B is correct. Acrosome of a sperm is derived from Golgi apparatus. Next question is which layer prevents polyspermy? Which layer prevents polyspermy? Option दिया हुआ है betalain membrane. Option B is correct, zona pellucida. Zona pellucida layer prevents polyspermy. Next question is the gestation period in humans is about. Gestation period in humans about 280 days. 280 days, 9 months or 280 days. Gestation in human is about 9 months or 20 days. Next question is which part of a sperm contains mitochondria? Which part of a sperm contains mitochondria? Head, tail, midpiece. Option C is correct. Midpiece part of a sperm contains mitochondria. Next question is implementation of the embryo occurs in. Implementation of the embryo occurs in ovary, fallopian tube, uterus. Option C is correct, uterus. Implantation of the embryo occurs in uterus. Option C is correct. Next question is which structure connects the fetus to the placenta? Which structure connects the fetus to the placenta?
umbilical cord. Option C is correct, umbilical cord. Next question is, which of the following is temporary method of contraception? ऑप्शन दिया हुआ है वेसेक्टोमी, टोबेक्टोमी. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, टेम्पोररी मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज IUD, इंट्रायूटेराइन डिवाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शाहेली इज ऑप्शन दिया हुआ है a surgical method, hormonal oral contraceptive pill, copper IUD and barrier method. Option B is correct, hormonal oral contraceptive pill. Saheli is hormonal oral contraceptive pill. Next question is, medical termination of pregnancy is allowed up to 20 weeks. Option C is correct. Medical termination of pregnancy, MTP, is allowed up to 20 weeks. Next question is, which disease is not sexually transmitted? Malaria, sexually gonorrhea, syphilis, hepatitis B. सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकता है, लेकिन मलेरिया जो है ये मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है, नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड. मलेरिया इज ए मॉस्किटो बॉर्न डिजीज. ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, amniocentesis is used for. Amniocentesis is used for sexual determination, treating infertility, contraception, preventing implementation. Option A is correct. Amniocentesis is used for sex determination. Option A is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंग्लिश का है, तो सिर्फ 25 क्वेश्चन जो है ये सिर्फ सिनोनिम एंड एंटोनिम्स का दिया हुआ है. तो ये सब जितने भी क्वेश्चन मिलेगा एंटोनिम्स एंड सिनोनिम इंग्लिश का, तो ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एंट्रेंस एग्जाम का, तो ये सब उठाया है. तो शुरू करते हैं. फर्स्ट वाला है सिनोनिम. चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग. 1 से 10 तक है क्वेश्चन. तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. सिनोनिम ऑफ अबैंडन. सिनोनिम ऑफ अबैंडन बताना है, तो ऑप्शन दिया हुआ है कंटिन्यू, रिजेक्ट, सपोर्ट, डिस्ट्रॉय. ऑप्शन बी इज करेक्ट. अबैंडन, रिजेक्ट. अबैंडन मीन्स होता है टू लीव और गिव अप समथिंग, तो सिमिलर टू रिजेक्ट के साथ सिमिलर है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, रिजेक्ट और फॉरसेक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉम्प्रीहेंड. कॉम्प्रीहेंड ऑप्शन दिया हुआ है इग्नोर, ग्रास्प, मिस, फॉरगेट. ऑप्शन बी इज करेक्ट. कॉम्प्रीहेंड मीन्स होता है टू अंडरस्टैंड और ग्रास्प समथिंग मेंटली. ऑप्शन बी इज करेक्ट. सिनोनिम ऑफ कॉम्प्रीहेंड इज ग्रास्प. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिनोनिम ऑफ कॉन्सील. सिनोनिम कॉन्सील का सिनोनिम बताना है, तो ऑप्शन दिया हुआ है रिवील, डिस्प्ले, हाइड, डिस्क्लोज. ऑप्शन सी इज करेक्ट, हाइड. तो कॉन्सील मीन्स होता है टू हाइड और कीप समथिंग इन सीक्रेट, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, हाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विक्ट्री. विक्ट्री ऑप्शन दिया हुआ है डिफीट, ट्रिम्फो, सरेंडर, लॉस. ऑप्शन बी इज करेक्ट. विक्ट्री मीन्स सक्सेस इन ए बैटल वॉर कॉन्टेस्ट, तो सेम एज ट्रिम्फ. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेनेरस. ऑप्शन दिया हुआ है क्रूएल, सेल्फिश, काइंड, ग्रीडी. जेनेरस मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट, काइंड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियल का सिनोनिम बताना है, तो आर्टिफिशियल इज ऑप्शन, आर्टिफिशियल मीन्स होता है मैनमेड, मीन्स नॉट जेन्युइन, तो इट्स रिलेटेड टू ऑप्शन सी इज करेक्ट, फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेगाइल. फ्रेगाइल ऑप्शन दिया हुआ है हार्ड, डेलिकेट, स्ट्रॉन्ग, स्टेबल. तो फ्रेगाइल मीन्स होता है इजीली ब्रेकेबल और डेलिकेट. ऑप्शन बी इज करेक्ट, डेलिकेट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिनोनिम ऑफ ऑब्स्टिनेट. सिनोनिम ऑफ ऑब्स्टिनेट दिया हुआ है फ्लेक्सिबल, स्टबबॉर्न, ओबीडियंट, सॉफ्ट. ऑप्शन बी इज करेक्ट,
स्टाफ बॉर्न। तो ऑब्स्टिनेट मीन्स रेफर्स करता है समवन हु इज स्टाफ बॉर्न और नॉट इजीली कन्विंस्ड। ऑप्शन बी इज करेक्ट, स्टाफ बॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्फ्लुएंस। सिनोनिम ऑफ इन्फ्लुएंस इज, ऑप्शन ए इज करेक्ट, इन्फ्लुएंस मीन्स कंट्रोल। सिनोनिम ऑफ इन्फ्लुएंस इज कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनॉर्मस ऑफ सिनोनिम। इनॉर्मस ऑफ सिनोनिम इज, ऑप्शन दिया हुआ है टाइनी, शॉर्ट, ह्यूज, लिमिटेड। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ह्यूज। इनॉर्मस, सिनोनिम ऑफ इनॉर्मस इज ह्यूज। इनॉर्मस मीन्स होता है वेरी लार्ज और ह्यूज। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है एंटोनिम है, तो चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग। विपरीत शब्द बताना है, तो 11 to 20 तक एंटोनिम से बताना है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। अराइवल, एंटोनिम ऑफ अराइवल इज डिपार्चर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटोनिम्स ऑफ स्कार्सी। रेयर, फ्यू, अबंडेंट, इनसफिशिएंट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। स्कार्सी, एंटोनिम्स ऑफ स्कार्सी इज अबंडेंट। स्कार्सी मीन्स होता है नॉट एनफ, नॉट एनफ, अपोजिट इज अबंडेंट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑप्टिमिस्ट। एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्ट इज रियलिस्ट, साइनिक, पेसिमिस्ट एंड ड्रीमर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्ट इज पेसिमिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडवांस। एंटोनिम ऑफ एडवांस इज, ऑप्शन ए इज करेक्ट, रिट्रीट। तो एडवांस मीन्स होता है टू मूव फॉरवर्ड, तो इसका अपोजिट होगा ऑप्शन ए, रिट्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटोनिम ऑफ हार्मफुल। ऑप्शन दिया हुआ है डेंजरस, केयरफुल, यूजफुल, हार्मलेस। ऑप्शन डी इज करेक्ट। हार्मफुल, एंटोनिम ऑफ हार्मफुल इज हार्मलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंपल। एंटोनिम ऑफ सिंपल इज कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड बताना है, अपोजिट बताना है, तो सिंपल का अपोजिट होगा कॉम्प्लिकेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोलाइट। पोलाइट, ऑप्शन दिया हुआ है रूड, क्वाइट, रफ, काइंड। ऑप्शन ए इज करेक्ट, रूड। पोलाइट मीन्स होता है वेल मैनर्ड, एंड इसका जो अपोजिट होगा रूड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटोनिम बोला है, एंटोनिम ऑफ एक्सेप्ट इज रिफ्यूज। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओल्ड। ओल्ड डैश, ओल्ड इज सीनियर, यंग, वीक, एज्ड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओल्ड, ओल्ड का एंटोनिम है यंग। ओल्ड इज द ऑपोजिट ऑफ यंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वीक डैश पुअर, लेजी, स्ट्रॉन्ग, माइल्ड। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। वीक का एंटोनिम है स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्राइट का सिनोनिम बताना है, तो डाल, क्लेवर। ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्लेवर। ब्राइट का सिनोनिम बताना है क्लेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेयर का सिनोनिम बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है कॉमन, ऑर्डिनरी, स्कार्सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, स्कार्सी। रेयर मीन्स होता है अनकॉमन और स्कार्स, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंसल्ट का एंटोनिम बताना है, तो अगर इंसल्ट, इंसल्ट का अपोजिट होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, प्रेज। तो इंसल्ट जो है, इंसल्ट इज टू ऑफेंड, एंड प्रीज जो है इज टू एप्रिशिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केयरफुल। एंटोनिम ऑफ केयरफुल। केयरफुल का एंटोनिम बताना है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, रेकलेस। केयरफुल मीन्स cautious and reckless means also careless. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉडर्न का एंटोनिम बताना है। एंशिएंट, स्टाइलिश, स्मार्ट, न्यू। तो मॉडर्न, ऑप्शन ए इज करेक्ट। मॉडर्न का अपोजिट होगा, विपरीत शब्द होगा एंशिएंट। तो ये था टोटल 100 क्वेश्चन, 100 MCQs BSc नर्सिंग मॉक टेस्ट का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।